And hi, I'm Aditya and I rant on very topics that is important for your life. So what you are going to get on this alpha ranting series, तो इस alpha ranting series में you are going to get a lot of values. पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, what is alpha? alpha का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी जंगल में प्राणी रहते हैं, they all stay in a group, ठीक है? कुछ अलग रहते हैं, कुछ ग्रुप में रहते हैं. तो उस ग्रुप में जो सबका लीडर होता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जो अपनी जगह क्लेम करता है, लड़के जीतता है, उसे कहते हैं अल्फा. एक शेरों का ग्रुप होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, उस शेर के ग्रुप में मेल लायंस होंगे, फीमेल लायंस होंगी, क्यूब्स होंगे, उनके बच्चे. बट उन सभी के ग्रुप में सिर्फ एक लायन होगा जो होगा अल्फा, और वो अल्फा लायन उस ग्रुप का किंग होगा, उस ग्रुप का हेड होगा. एंड ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ दैट ग्रुप इज बिलोंग्स टू ओनली वन लायन एंड दैट इज अल्फा. और उसी के क्यूब्स, उसी के बच्चे होंगे बस. और जो अदर मेल लायंस हैं, दे वोंट बी एज बिगर एज हिम, मतलब हो भी सकते हैं, बट स्टिल द अल्फा हैव क्लेम्ड हिज प्लेस बाय फाइटिंग द फकिंग राइवल्स ऑफ हिज. और इसके अंदर उसकी जान भी जा सकती है. इट इज फाइट टिल डेथ थिंग, कि तुम्हें तब तक लड़ना है जब तक अगला मर जाए या मैं मर जाऊँ. And then you became an alpha. So in humans, we don't have to fight on the fucking groups. We don't have to fight them for the real, but we have to fight each and everybody, each and every guy around us, and that's how we became an alpha. But हमें किसी का मूड तोड़ना होता है. To become an alpha, we have to do some other things. जैसे कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, you have to be an alpha. Alpha कौन होगा एक क्लास में? टॉपर. Alpha कौन होगा एक ग्रुप में? जो सबसे ज़्यादा इसकी टॉपर होगी, वो alpha है. And alpha, you can become an alpha by having a lot of money of your dad, but that is not the thing that will keep you an alpha. तुम एक जगह alpha हो सकते हो, एक छोटे से ग्रुप में, but in other places you will be sucking. तुम गंदी तरफ फील हो जाओगे. You can't be an alpha just by having your dad's money. Yeah, it is a fucking powerful thing, and that is very very precious and important, and बहुत अच्छी चीज़ अगर तुम पे है तो. All the people who does not have dad's money, you suck babe, but क्या कर सकते हैं ना. But yeah, it helps you becoming an alpha. तुम्हारे बच्चे alpha हो, you have to take care of it. You have to work hard to be that person. You have to be that person. ठीक है? Now, alpha is a person. अगर वो किसी भी कहीं लड़कियों का ग्रुप है, all of the girls will want this one guy, and he will be an alpha. This one alpha guy is the topper. He's the achiever. He has the best physique. He has the best communication skills. He has the best of the best abilities to deal with everything that he faces. And I can say that I have been that alpha. I am that alpha, and I'm working towards becoming a real alpha. I've not reached the peak yet, and this is how the alpha brain works. You will never reach the peak. It's always in your head to achieve certain things, and you'll be keep fighting hard and achieving all of the things. And then you are setting the goals that is above your goals previously, and that is how you become an alpha. So alpha becoming an alpha is a fucking hard thing, but it is easy. Okay? If you can really stick to it. So I'll be posting many of the renting videos on alpha rents. If you want to become an alpha, you have to consume all of the videos, implement all of the things that I'm going to tell you, and yeah, you will soon be becoming an alpha in your own areas. If you're interested, follow this series, and I'll see you in the next one.